Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आप तक लाएंगे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें और साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल। Thank you, Sonu and Harveerji. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Key domestic indices witnessed losses of more than 0.5%. Sensex settles below 65,000 mark. Nifty ends below 19,300 level. B20 Summit India 2023 commences from today in New Delhi. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights key priorities for sustained global economic recovery. And Brent crude hovers around $84.37 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 65,000 के नीचे और निफ्टी 19,300 के नीचे हुए बंद। B20 शिखर बैठक भारत 2023 आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सतत वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए उच्च प्राथमिकताओं पर की चर्चा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $84.37 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 0.5% से अधिक के नुकसान में रहे। सेंसेक्स 65,000 के नीचे आ गया और निफ्टी 19,300 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में ये गिरावट मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आई। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.56% की मंदी से 366 अंक कम होकर 64,886 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.62% की मंदी से 121 अंक कम होकर 19,265 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.85% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.25% गिरकर बंद हुआ। The key domestic share indices witnessed losses of more than 0.5% today. The BSE Sensex closed below the 65,000 mark, while the NSE Nifty finished below the 19,300 level. Both indices declined amid mixed global cues. The BSE Sensex lost 366 points or 0.56% to end at 64,886. The NSE Nifty also dropped 121 points or 0.62% to settle at 19,265. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.85% and the small-cap index fell 0.25%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 7 companies appreciated while those of 23 declined. Bajaj Finance and Asian Paints both advanced 1% each. Bharti Airtel gained 0.4% and Titan rose 0.2%. On the other hand, IndusInd Bank and JSW Steel both declined 1.9% each. Larsen and Toubro slumped 1.8%. Ultratech Cement and Geo Financial Services both fell 1.7% each. In sectoral indices at the BSE, only one sector gained while 19 logged losses. Telecommunications sector added 1.4%. On the other side, capital goods declined 1.29%, realty and power both slipped 1.26% each. Utilities sector fell 1.24%. The overall market breadth was negative as shares of 1,494 companies appreciated and 2,145 companies declined. A total of 124 shares remained unchanged. Harveerji, this is for the fifth straight week. The Sensex has ended in a loss. Do you think it's a bottoming out? And what are some indications for the next week? What will the Sensex move depend on?
Actually, we have witnessed a continuous growth in the market, and the values of the stocks are everybody is talking. A majority of experts overpriced or at the peak. So, in that sense, there is I think there is a fatigue in the market. And now we have seen some global developments also. Today, particularly, markets actually has gone down, and in majority of the big markets. And at the same time, everybody is looking towards U.S. Fed chief that what kind of indication he gives in his speech today later on, and whether to control the inflation more, there'll be another hike in the interest rate, policy rate, or they will pause it. It depends a lot because it affects directly the yield, and then investment moves this side or that side. It's from stocks to bonds and other options. And in our market, FIs have sold in this month of August. They have sold around 6,000 crore of stocks in the market. So it shows, I think, the particularly financial sector. So maybe this may be a profit booking. So and as you said, there is a continuously there is a drop in the Sensex, so that market may be trying to find out a level or bottom out all these Bottoming things. out, So right. from where it can make a new move. सो जैसे आपने कहा कि ये सिंपोजियम हो रहा है, जैक्सन होल सिंपोजियम, जिसका सब इंतज़ार करते हैं, एनुअल सिंपोजियम है, मेजर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के उनका। सो क्या आपको लगता है अभी जो आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स पर जो इंडिकेशंस आएंगे कि आगे चलकर उनकी क्या मूवमेंट होगी, एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट आपका क्या मानना है, अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन कितनी काबू में आ पाई है, और क्या आपको लगता है ब्रॉडली रवैया रहेगा सेंट्रल बैंक्स का? एक्चुअली इन्फ्लेशन तो चैलेंज है, और सबका मेजर टास्क जो सेंट्रल बैंक्स है उनका है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और जो उनका एक लेवल है, जो कंफर्ट जोन है, वहाँ उसको लेकर के आए। तो ये दुनिया भर में पर्टिकुलरली जो बड़ी इकोनॉमी है, आप यूरोपियन यूनियन को देखो या यूके को देखो या फिर अमेरिका को देखें या जापान को, सब जगह ये एक प्रॉब्लम है। और इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीज़न डिसरप्शन है। पहले कोविड का डिसरप्शन था, सप्लाईज डिसरप्शन आया तो उससे प्रेशर आया। उसके बाद ये यूक्रेन और रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ये है डिसरप्शन। सो जो सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वी हैव सीन जस्ट कि पिछले दिनों जो ब्लैक सी ग्रेन डील था उससे रशिया ने एग्जिट कर दिया। सो एंड फूड प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप। तो अभी क्या है कि पर्टिकुलरली जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइसेस फॉर्म अप हो रहा है। सिर्फ एक कमोडिटी है जो थोड़ा सा उसका अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज़ डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में जो उसमें काफ़ी प्राइस करेक्शन हो रहा है जो है अभी दुनिया भर में। सो ये सिचुएशन में ये एक चैलेंज सबका है कि इस तरह का इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इसको कैसे कंट्रोल करें, और ये लगातार रहेगा। तो उसमें फिर आप मनी टाइटनिंग पॉलिसी को अपनाएं, कैसे करें, तो ये डायरेक्टली फिर मार्केट्स और इन सबको अफेक्ट करता है। हमने भी जैसे देखा कि हमारे यहाँ भी जो लेटेस्ट नंबर है वो 7% से ज़्यादा आ गया CPI का। सो RBI इज ऑल्सो वरीड अबाउट इन्फ्लेशन एंड थिंकिंग अबाउट दैट। और अगर हम चाइना की तरफ देखें तो टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। वहाँ पर रेट्स को काटा जा रहा है। उसका क्या कारण है? चाइना का जो कहें कि स्लो डाउन की जो बातें चल रही हैं वो कितना बड़ा एक चैलेंज है पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि चाइना को एक इंजन माना जाता है ग्रोथ का, वर्ल्ड ग्रोथ का। बिल्कुल। एक तो देखिए कि चाइना जो है वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और वो वहाँ पर जो भी गतिविधि ज़्यादा बढ़ती है उसका पूरा इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी पे होता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो फिर डिमांड बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल और बाकी प्रोडक्ट्स की उस तरह से। अब चाइना का एक तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि नंबर को लेकर के सब लोग क्वेश्चन करते हैं चाइना का कि एग्जैक्टली नंबर क्या है। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी उस तरीके से ग्लोबल लेवल पर नहीं है, बट इट्स ए ह्यूज इकोनॉमी। तो वहाँ जो ये हो रहा डिसलेशन है, फिर जॉब का चैलेंज आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज भी आया, रेट कट किया गया, तो ये सारे फैक्टर उसको एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उनका एक जो बड़ी हाउसिंग सेक्टर का जो एक कंपनी है एवरग्रांडे है, उसको लेकर के चैलेंज आया, तो ये लगातार है। तो अब अगर चाइनीज़ इकोनॉमी अफेक्ट होती है, जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है,
अगर चाइनीज इकोनॉमी ज़्यादा डिसलरेट होती इट विल ऑल्सो अगेन विल बी ए बिग डिस्ट्रप्शन फॉर ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल. तो इसका इम्पैक्ट फिर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा. So, जब हम when we see the Chinese economy, Harveer ji, and its state and the figures and the numbers that are coming out in terms of Indian agriculture, so does it open some opportunities at the global level for Indian agriculture production? What will be the impact on India? Actually, you see that Indian agriculture is also a very huge sector. Right. And in many crops and commodities, we are number 1 or number 2 or number 3 in production numbers. So, and but we our agriculture depends a lot on monsoon. And we have seen this year, this El Nino is strengthening in that Pacific Ocean. And it depends because Kharif is very crucial for us. And normal monsoon rainfall is important for both the crop, not only just Kharif but for Rabi also, because we get our reservoirs full in this monsoon season, so that water is, gets used for Rabi crops also. Okay. So in that case, like we have, as per government data, we have good production of rice and wheat and sugar also, and we are exporting. We exported more than 6 million tons of sugar this season. So, and on the other hand, our share in the global market for rice export reached at the 40%. Or even more than that. We are the largest exporter, but we have to see our inside requirement also within our domestic requirement, whether supply is good, price. We can't allow the price rise at the cost of this thing if we are continuously in this remain as exporter. So because we have a huge population also to feed and so definitely we have some other avenues. We have basically then fruits or vegetables are also being exported from the country. So it depends, and agricultural export crossed $50 billion consecutively for 2 years. So we have to see this year where do we stand in this current fiscal. सो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, फूड इन्फ्लेशन आपने मेंशन किया, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा आपको लगता है कि जो फिस्कल लेवल पर जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है? एक्चुअली जो एग्रीकल्चर में और जो फूड इन्फ्लेशन है वहाँ सप्लाई साइड मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डिमांड है उसको तो आप जो फूड की डिमांड है उसको तो कर्टेल नहीं कर सकते आप मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करके या इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके. तो यहाँ पर जो मोर देन आरबीआई गवर्नमेंट के जो एक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो वी हैव बेटर प्रोडक्शन, और उसको हम अच्छे से मैनेज करें सप्लाई साइड को, तो फिर फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान रहता है. क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी मेजर हैं, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या करना है, हमें ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्या करना है, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कैसे एनकरेज करना है, उसका डोमेस्टिक ट्रेड को किस तरीके से देखना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सारा बेसिकली अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा इसमें होता है और ये सरकार का काफ़ी इसमें रोल होता है. आरबीआई अपना काम करता है, बट और डेफिनेटली आरबीआई हमेशा कंसर्न रहता है फूड इन्फ्लेशन को. जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना रिकमेंड करती है, उसकी मीटिंग होती है, उसके पहले लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है. दे ऑल्सो कम्स आउट विद रिपोर्ट्स. ये फूड इन्फ्लेशन या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो मेजर कमोडिटीज़ हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन, पल्सेस, आपका शुगर और एडिबल ऑयल, तो ये वहाँ पर लगातार एक बहुत ही एक तरीके से उसके ऊपर निगाह रहती है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा शेयर है और ये सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाला पक्ष होता है अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो. Harveer ji, we've been listening for such a long time India's dependence on monsoon for agriculture, and over the years, yes, we have made investment in the agriculture sector. But we still are by and large really dependent on the monsoon. So is this a situation that actually we can, by technology, rectify, or will this always remain in some way or the other? Definitely technology can help us on this front. And actually dependence
on monsoon varies state to state. There are states where almost 98% area is covered under assured irrigation, but there are states where only 21, 24, 25% area is just under assured irrigation. So definitely we should come out with such kind of strategy with low investment. If we can have more irrigated area or assured irrigation, like now we have some solar pump schemes and government is providing subsidy also, so that where this water level is high and shallow tube well can work, and with solar pumps, so it can be done, or through watershed management, check dams, and at the same time technology is important now, because with less water you can irrigate more area, or you can have more crop basically through drip irrigation or sprinkler irrigation. So there is no need to have only flood irrigation. Now our agricultural scientists have proven this thing, that there is no need to flood even a paddy field. Even you can grow paddy with the drip irrigation or sprinkler. Wheat is easily to grow through sprinkler irrigation. Even sugarcane you can cultivate with drip irrigation. So that you can imagine the level of saving of water is huge. But definitely it needs encouragement. It needs more and more investment, and more public investment can help, and to educate the farmer, to guide them to adopt these new technologies. And I think this is the right way we can increase more एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन. सो इसमें कई बार जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हम सोलर एनर्जी में भी देखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होता है, लेकिन फिर ऑपरेशनल आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ओवर द रनिंग ईयर्स मिलते हैं. सो आपको लगता है कि शुरू का जो इंसेंटिव देना, सब्सिडीज देना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, वही तो असली इफेक्टिवनेस तो उसी में है. और ये मैंने देखा है बहुत जगह गवर्नमेंट ने जिस तरह से दिया है, ऑलमोस्ट कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ उनको ज़रूरत है फार्मर से रॉ मटेरियल की, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं. समटाइम इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री टू द फार्मर जो है, तो उनको पावर बिल भी नहीं देना है और उनको डीजल भी बर्न नहीं करना है. एंड इट इज़ इको फ्रेंडली ऑल्सो फॉर एनवायरमेंटली ऑल्सो इट इज़ गुड. यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी पोल्यूशन or not any negative impact on environment. So, जैसा अभी गौरा ने कहा था कि कुछ समय से एक मंदी का हम थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, सेंटिमेंट देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में. इनफैक्ट हम देखें तो उसका एक कॉरलरी है कि गोल्ड में मजबूती है. एक अनसर्टनिटी का माहौल है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, थोड़ा सा इन्फ्लेशन काबू में आए उसको लेकर. ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट्स में, उनके लिए आपकी ब्रॉडली एडवाइस क्या होगी? एक तो मेरे ख्याल से देखिए, हमारा मार्केट जो है उसने काफ़ी सस्टेन किया है ग्रोथ को, तो उसमें कोई ऐसे बड़े शॉक्स नहीं आए हैं, तो पैनिक नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर को. एंड इफ दे कैन फाइंड सम न्यू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के साथ साथ, तो उनको उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए. लाइक गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया आप जा करके, जो अगर आप देखें तो दोज हु आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन अदर ऑप्शंस. सो अभी तो आई थिंक रियल इस्टेट इज ऑल्सो डूइंग रीजनेबली रिकवरिंग फ्रॉम वेरी बैड फेज. सो पीपल कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. तो आई थिंक एंड इवन ड्यू टू दिस इंक्रीज ऑफ पॉलिसी रेट, नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव. चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर रुख करते हैं. उससे पहले बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया $1 की तुलना में 82 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 104.03 पर चल रहा था. आज अधिकांश अन्य एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का रुख था, सिवाय सिंगापुर के, जहां स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा. जापान का निक्केई सूचकांक 2.1% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.75% के नुकसान में रहा. हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट आई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां तेजी का रुख था. फ्रांस का कैक 0.7% के उछाल पर था. जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी दोनों 0.5% की बढ़त में थे. A quick look at the US markets. US stocks ended more than 1% lower yesterday after this week's sharp gains and as investors were nervous ahead of Federal Reserve Chair Jerome Powell's speech today.
The Nasdaq Composite Index tumbled 1.9% and the S&P 500 Index declined 1.35%. The Dow Jones Industrial Average fell 1.1%. Harveerji, quickly in terms of international markets, you had earlier said that international markets were also, on the lower side. How are you seeing this for the coming week? But if you see, everybody is waiting for this Right. speech, and U.S. economy is doing reasonably okay. If you see the claim for unemployment are also going down, and corporates are doing well, and now dollar index is also strengthening. So, but they have their target to control the inflation to bring below 2%, or it may depend on what kind of strategy, and that will affect the overall global market scenario. Right. We move on to our next story now. The B20 Summit India 2023 commenced in New Delhi from today. During the 3-day summit, Union Ministers Dharmendra Pradhan and Dr. S. Jaishankar, G20 India Sherpa Amitabh Kant, trade ministers of various countries and global business leaders will share their ideas on the issues concerning businesses globally. Prime Minister Narendra Modi will attend the special session on the 27th of this month as the chief guest. The summit is based on the theme of B20 India RAISE, responsible, accelerated, innovative, sustainable, equitable businesses. 7 task forces were created for India's presidency in areas of inclusive global value chains for resilient global trade and investment, future of work, skilling, mobility, digital transformation, innovation, and financial inclusion for economic empowerment. Addressing the summit today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India has showcased an accelerated pace of economic reforms in the last 9 years. She said the reforms undertaken by the government have put India on the path of sustainable growth. The share of capital expenditure in total rose from 12.3% in 2018 to 22.4% in fiscal year 2024. She said several measures have been implemented by the government and it has incentivized states to increase their capex spending. Ms. Sitharaman said states' capital expenditure has also increased by 74.3%. The finance minister said the government's priority is to tame inflation to ensure sustained economic growth. She said central banks will have to keep in mind growth-related priorities. क्या कहेंगे आप जो बिजनेस ग्रोथ है, बिजनेस वर्ल्ड, इकोनॉमिक वर्ल्ड, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है और भारत की पोजीशन अभी कितनी स्ट्रांग है? देखिए, एक तो अब एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड, और जो इसमें वैल्यू चेन्स का एक नया सिस्टम है. हम लोग कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका अगला पार्ट कोई दूसरा देश कर रहा है, फिनिश प्रोडक्ट कहीं तीसरी जगह बन रहा है. तो ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड पहले इकोनॉमीज नहीं थी. सो अर्लियर वी यूज टू टॉक अबाउट कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा, पॉलिसीज का इशू था. बट अभी जो है ये काफ़ी कुछ इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है. उसी में ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें मार्केट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, उसमें लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं. और डेफिनेटली जो हमारे देश में जिस तरह का टैलेंट पूल है, जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर है, उसमें पर्टिकुलरली नई टेक्नोलॉजी का जो आईटी है और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी और जो एरियाज़ हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका में जो है अभी हमारा देश है. और उसी में आप देखो कि वैल्यू एडिशन भी काफ़ी हो रहा है. अगर आप देखो कि जो गवर्नमेंट का PLI स्कीम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी फोकस है, और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं स्मार्टफोन के, उस तरीके से. इसी तरीके से गवर्नमेंट इज़ गिविंग PLI आपका ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में दे रहे हैं, बट उसमें कुछ पार्ट्स कहीं से आ रहा है, कुछ हम कर रहे हैं. एंड एक सवाल ये भी है कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात है और क्लाइमेट के लिए जो क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और इंटरडिपेंडेंसी ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो इसलिए जो रोल है इंडिया का वो लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें इंडियन इकोनॉमी का जो महत्व है वो लगातार बढ़ा है. Harveerji, the finance minister also said that green shoots of private investment now are appearing. That means some private investment also is now coming into the economy, which had stopped for some time. Why do you think so far it's not been too strong? Because right now, government investment in the economy is huge and actually really sustaining it and keeping it up. Actually, this is a cycle. If you see,
when private investment is not coming, private investment is directly related to the result or for their earning for future. If there is a good demand for their product, so they will add the capacity or they will put up new plants and investment, make capital investment and all. So demand was not picking up earlier, but in such a scenario, government starts investing. And if we have seen in the last few budgets, capital expenditure level has gone very high. Even this budget was very huge capital expenditure. So when government start investing and creates demand for private sector, so private sectors follow. Okay. So this huge capital investment made by the government, particularly in infrastructure, is basically creating avenue for private sector to invest. So that's why we are seeing this green shoot from the private sector and capital investment. And this is the job of any government in such a scenario, to create such an environment so that private sector also follows the government investment. और जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक्स हैं लाइक फिस्कल डेफिसिट, उसको हमने जो कंट्रोल में रखा है और लाइकलीहुड दिख रही है कि वो कंट्रोल में रहेगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए? अगर हम बैंक्स का भी देखें, बैंक्स की जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ये कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं? देखिए, एक तो बैंक्स की बैलेंस शीट ठीक हुई है, ये जो एनसीएलटी और आईबीसी की वजह से, और अगर आप देखो कि बैंक्स के प्रॉफिट्स काफ़ी बेहतर आए हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरे फिस्कल को लेकर के, क्योंकि हमारे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, हम देखें जो जीएसटी का जो एक ग्रोथ है, जीएसटी कलेक्शन का 1.65 लाख करोड़ पर मंथ, और वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और अभी जो डाटा है उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें भी ग्रोथ है। तो इसका मतलब जब हमारे जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं वो मीट कर रहे हैं, सो इट इज इजी फॉर अस टू sustain the fiscal deficit level we want to be at there announced by the government in budget to meet the target. तो उसमें ये काफ़ी मदद मिली है रेवेन्यू जनरेशन से, रेवेन्यूज अच्छे हैं और उससे गवर्नमेंट को एक स्पेस भी मिलता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट रिसेंटली आपका ब्रीफ सा टिप्पणी जो अभी एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें दिखाया गया है कि मिडिल क्लास बढ़ रही है भारत में, उससे आपको लगता है कि जो कंजम्पशन है उसको भी एक बढ़ावा मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी इकोनॉमी का? देखिए, ये तो फैक्ट है कि भारत में एक बड़ा नंबर मिडिल क्लास का है जो कि कंजम्पशन करता है और वो जो उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखिए कि जो ऑटो का डिमांड है पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स का, वो लगातार एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और आफ्टर दिस कोविड दिस थिंग, बट नाउ नंबर्स आर वेरी हाई और सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं कंपनी, ये उस तरीके से वाइट गुड्स का है। सो डेफिनेटली एक बड़ा चंक है जो कि प्रोपेल करता है डिमांड को। We take a look at the oil prices. Oil prices rose about 1% today as the dollar firmed ahead of an eagerly awaited speech by the head of the US Federal Reserve for hints on the outlook for interest rates. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.37 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $80.05 per barrel when reports last came in. Harviji, quickly, we had seen some time back, just about a month plus back, 80 was the range where Yes. oil was hovering around, and now steadily, slowly it seems to be climbing, and which is maybe because of our Russian imports, not so devastating for us, but in the long run for the Indian economy. Why do you think these rates are slowly inching up? Maybe the demand is coming and supply is also tightening, and these OPEC plus countries are not ready to basically produce more oil, and we are a very huge importer of oil, big importer. Our demand Second to China only, second to absolutely. China, and our economy is also growing, so that the consumption level, demand for oil is also increasing, and we meet our more than 80% requirement of oil from imports. So it's a very crucial thing. If price goes up, it has a direct impact on our inflation and on demand also. But we are seeing some substitution through this ethanol blending for the domestic front. This basically biofuel is also helping us. और अब चलते चलते सराफा बाजार पर एक नजर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 24 रुपए महंगा होकर 58,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 197 रुपए के उछाल से 73,765 रुपए प्रति किलो पर थी।
वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,945.40 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी बढ़त दर्ज करती हुई $24.59 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरवीर जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी। धन्यवाद। Thank you, Arvirji. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices witnessed losses of more than 0.5%. Sensex settles below 65,000 mark. Nifty ends below 19,300 level. B20 Summit India 2023 commences from today in New Delhi. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights key priorities for sustained global economic recovery. And Brent crude hovers around $84.37 per barrel. And that's it in this edition. Namaskar. Market Patra.